हाँ जी, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn about The Emperor Has No Claws by Arvind Krishna Mehrotra. Subject is Indian Literature in English of M.A. English Semester 3rd. So first of all we will write about the critic. Arvind Krishna Mehrotra was born in Lahore in 1947. He is well-known poet, essayist and translator associated with modern Indian English literature and is admired for his sharp wit, humor and unique writing style. Mehrotra's works often blend everyday experience with deeper reflections, making them relatable and thought-provoking. Apart from poetry, he has written essays and translated ancient Indian texts, showcasing his versatility as a writer. His ability to critique society and literature with subtle humor make him an important voice in contemporary Indian writing. So अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा उनकी जो लिखी हुई पोइट्री एंड एसेज हैं वो बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग होते हैं। वो आम जिंदगी की बातें लिखते हैं जिनमें डीप मीनिंग्स हाइड होते हैं। उन्होंने काफ़ी ओल्ड इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी किया है एंड उनकी बातें सच्चाई और वी कैन से ट्रुथ ट्रुथ को इजी एंड इंटरेस्टिंग वे से दिखाती है। ओके, नेक्स्ट इज हिज पोइट्री कलेक्शन. So first is Nine Enclosures, second is The Transfiguring Places, third is Collected Poems. Next are the essays written by Arvind Krishna Mehrotra. First is The Emperor Has No Claws, and there are some various essays in literary magazine showcasing his wit and critical thoughts. Okay, after that his translations. First is Song of Kabir, second is Prakrit Love Poetry. Hanji, so next is Introduction to the Essay. So the particular essay that we are dealing with is titled The Emperor Has No Claws by Arvind Krishna Mehrotra. This essay is used generally to describe a situation in which people are afraid to criticize something or someone because the perceived wisdom of masses is that the thing or person is good or important. सो ये वाला एक्सप्रेशन तब यूज़ किया जाता है जब लोग किसी की आलोचना करने से डरते हैं, लाइक सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग मानते हैं दैट दिस थिंग और पर्सन इज गुड और इम्पॉर्टेंट. सो अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा's essay The Emperor Has No Claws critiques the literary world for its pretentiousness, conformity and exaggerated praise of certain writers. सो उनका ये वाला ऐसे द एम्प्रर हैज़ नो क्लॉज लिटरेचर एंड सोसाइटी में दिखावे और झूठी तारीफ पर बेस्ड है. वो बताते हैं कि लिटरेचर में कई बार राइटर्स एंड पोइट्स की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ की जाती है. ओके, सो इस ऐसे में उन्होंने राजगोपाल पाठसारथी की आलोचना की है, जिन्होंने A.K. रामानुजन की पोइम्स को बहुत बढ़ा चढ़ाकर T.S. एलियट एंड विलियम ब्लेक जैसे ग्रेट पोइट्स के बराबर बताया है. उन्होंने ये कंपैरिजन गलत माना है. He used the famous story by Hans Christian Andersen where a foolish emperor believed that he is wearing fine clothes, but in reality he is naked. Mehrotra criticized people who, like the emperor, accept false praise, and those who, like the crowd, stay silent instead of speaking truth. I hope this introduction is clear to you. Hanji, so next is very important. Criticism of Rajagopal Parthasarthi's praise for A.K. Ramanujan. So Mehrotra specifically criticized poet and critic Rajagopal Parthasarthi for comparing A.K. Ramanujan's poetry to T.S. Eliot and William Blake. Mehrotra believed that this is an example of exaggerated praise and uncritical admiration in the literary world. Mehrotra writes, to compare Ramanujan to Eliot and Blake is not only ridiculous, but does more harm than good to Ramanujan himself. सो रामानुजन को एलियट एंड ब्लेक के बराबर कहना ना केवल गलत है, बल्कि ये रामानुजन को नुकसान पहुंचाता है,
ये कहना था मेहरोत्रा का. So these are lines from the text. You have to mention all these lines in your exam. Okay. So according to Mehrotra, such comparison elevate Ramanujan to an unrealistic standard and discourage honest critique of his works. He argues that while Ramanujan is a talented poet, the excessive praise creates an illusion of greatness that prevents reader from evaluating his work objectively. सो उनका कहना है कि रामानुजन एक अच्छे कवि है, लेकिन इस तरह का कंपैरिजन, इस तरह की तुलना करना उनकी रियल क्रिटिसिज्म, उनकी जो सच्ची आलोचना है उस पर रोक देती है, उस पर रोक लगाती है. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. हाँ जी, सो नेक्स्ट इज ब्लाइंड एडमिरेशन इन लिटरेचर. So Arvind Krishna Mehrotra used the example of Parthasarthi's praise to show how critics often overpraise writers to maintain their own literary reputation or to align with popular opinions. So मेहरोत्रा बताते हैं कि लिटरेचर में अक्सर क्रिटिक्स दूसरों की तारीफ इसलिए करते हैं ताकि वो खुद को बड़ा दिखा सकें. वो कहते हैं कि झूठी तारीफ से असली टैलेंट दब जाता है. ओके, नेक्स्ट आर द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. When a critic compares a poet to giants like Eliot and Blake, it says more about the critic's ambitions than about the poet's achievements. This shows how critics like Parthasarthis often exaggerate to gain attention or seem knowledgeable, which harms literature by creating false idols. Okay, next is connection to the emperor's story. सो मेहरोत्रा इस प्रॉब्लम को राजा की कहानी से जोड़ते हैं. वहाँ लोग राजा के नकली कपड़ों की तारीफ करते हैं जबकि राजा नेक्ड है. उसी तरह लिटरेचर में भी लोग सच बोलने की बजाय झूठी तारीफ करते हैं. मेहरोत्रा compared this to the emperor in Anderson's story, where everyone praised the emperor's invisible claws because they are afraid to tell the truth. In the same way, critics create illusions by exaggerating a writer's importance. Next are the lines from the text of the book. The emperor's nakedness is mirrored in the literary world, where great reputations are often stitched together from the threads of flattery and conformity. Mehrotra explained that real problem is not just with the writers, but with the people who silently support these false reputations. I hope these all points are clear to you. Hanji, so next is the need for honest criticism. Mehrotra praised those who speak the truth, like the child in Anderson's story, who says that the emperor is naked. सो मेहरोत्रा चाइल्ड की प्रेज करते हैं जो राजा की कहानी में सच बोलता है एंड कहता है कि राजा नेक्ड है. एंड ही सेज दैट ऑनेस्टी इज नेसेसरी टू इम्प्रूव लिटरेचर एंड हेल्प रीडर्स टू अंडरस्टैंड अ राइटर्स रियल वैल्यू. सो उनके अकॉर्डिंग सच्चाई कठोर नहीं है, ये लिटरेचर को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द ट्रुथ इज़ नॉट अनकाइंड, it is necessary for the growth of literature. He encouraged critics to evaluate writers honestly instead of blindly praising them. Okay. Hanji, so next we will learn about the style of the essay. Satire and humor. Mehrotra used humor and satire to make fun of the people who exaggerate and pretend. This makes the essay engaging and easy to read while giving serious message. For example, he mocked the critics who create unnecessary comparison to look important. Next is simple and direct language. Mehrotra writes in clear and straightforward way, so his ideas are easy to understand. Next are the metaphors. So the emperor's invisible claws are a metaphor for the false praise, and the child symbolize truth and honesty. Okay, next is relevance today. So Mehrotra's critique of blind admiration in literature is highly relevant in today's world. First, in literature, so literary awards,
reviews, and reputations are often influenced by trends, connections, and uncritical praise, much like Parthasarthi's overpraise of Ramanujan. In society, this behavior is also reflected in other fields, such as politics and media, where false images of greatness are promoted without questioning. So, Mehrotra's essays remind us to evaluate individuals and their works honestly rather than following popular opinions. Literature must be mirror of truth, not a hall of distorted reflections. ओके सो इस ऐसे में अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा लिटरेचर में झूठी तारीफ एंड दिखावे पर गहरी बात करते हैं। वो पार्थसारथीस की आलोचना करते हैं जिन्होंने रामानुजन की पोइम्स को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। वो कहते हैं कि लिटरेचर एंड लाइफ में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए ताकि असली प्रतिभा को पहचाना जा सके। ओके, आई होप दिस ऐसे इज़ क्लियर टू यू। एंड जेकर मेरे को कोई गलती होगी होवे देन प्लीज़ मैनू माफ़ करियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।